So yesterday we left here. So now we'll discuss about configure data locking and then perform data locking. Okay. So in this exercise, basically, how we are going to perform the data locking, that we are going to understand from here. So the major question is why we need data locking. Okay. The first question it comes that why we need data locking into our planning. So what it means is that someone you have made the planning, for example, कि भाई मुझे XYZ tasks has to be done. ठीक है, कोई भी क्षेत्र में, आई मीन जो भी वर्क, वट एवर द वर्क यू आर डूइंग, ठीक है, जैसे वी आर लर्निंग हियर, ठीक है, उसने लर्निंग में मैंने बोला कि भाई ये टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले हैं, राइट, अगर उसमें से मैं एक टास्क हटा दूं, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन कि जो टास्क सीक्वेंस में होना चाहिए था वो नहीं होगा, राइट, इट विल मिसमैच। उस केस में क्या होता है कि इफ आई विल लॉक समथिंग, उसमें क्या होगा कि नो वन कैन इरेज द थिंग्स, नो वन कैन इरेज, दैट मीन्स until unless it is not discussed with all the stakeholders, ठीक है, जो 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 भी आप प्लानिंग करने वाले हो नंबर्स का, ठीक है, कि भाई हम लेबर को कितना पैसा देंगे, ठीक है, लेबरिंग के लिए कितना करने वाले हैं, डिस्काउंट कितना देने वाले हैं, राइट, ऑपरेटिंग इनकम कितना होने वाला, ग्रॉस सेल्स में कितना इन्वेस्ट करने वाले हैं, राइट, सब कुछ हम प्लानिंग करने वाले, राइट, तो उसको लॉक कर दोगे कि ये नंबर मैंने लॉक कर दिया प्लानिंग, मतलब स्टोरी में। अब लेट्स डिस्कस विद ऑल अदर स्टेक होल्डर कि द नंबर विच वी, आई मीन द मनी विच वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इनटू द डिफरेंट एरियाज इज करेक्ट और नॉट। तो डेटा लॉकिंग रहेगा, उसमें कोई आपका चेंज नहीं कर पाएगा, मीनवाइल यू आर डिस्कसिंग विद द पीपल, ठीक है। देन वंस इट इज फाइनलाइज यू कैन पब्लिश इट। पब्लिश करने के बाद तो आप चेंज कर ही नहीं सकते हो, राइट। वही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। सो ओवर दिस, तो यहाँ पे क्या है, बिजनेस एग्जांपल इज you completed the forecast income statement and you want to block any changes to the data, ठीक है, वही बात लिखा हुआ है इंग्लिश में, ठीक है। Do this, you implement data locking in the planning model, ठीक है। So while doing your forecast income statement, you want that no one should do the further changes, so you are locking the data. Okay, in this exercise we are going to perform, we will create a new model and configure data locking into the planning model. We'll copy this process control planning model into our folder. So we'll go into the system. अरे इसका language फिर change हो गया। Because we'll go into the files, public CP23, solution, कुछ filter लगा हुआ है यहाँ पे।
Filter was there, okay, for story only. That's why we are able to see only story. Okay, so we are going to copy this process control model. So we'll copy it, process control model, including data. So we'll go and copy it into our folder. We will first look into the model, how it is exactly. In this model, you can see planning capability is already enabled. You have a version, account, date, product, entity. These are the dimensions, and one measure is there, that is sign data. And we do have a data management. We can see there should not be anything. Okay. Calculations, we can see if there is any. There is a no calculations created. Okay, simple. Now we'll go and check the settings also. So in the access and data privacy, you can see data locking is not yet enabled, validation and audit is not yet enabled. Yes. Okay, so that is done. So we have copied it. Now configure data locking in the planning model. Okay, so go to your model, view the setting entity dimensions. In the dimension table panel, notice that while data locking ownership is activated, but data locking owner column in the table is empty. Okay, so right now I have not enabled the data locking option over here. We'll go and हमने किया था आई थिंक ये वाला, ठीक है, डेटा लॉकिंग वाला पहले भी, ठीक है। अगर आप एंटिटी वाला जो डायमेंशन है उसको ओपन करेंगे यहाँ से, ठीक है, तो इसमें इस डायमेंशन में अगर देखेंगे तो ऑलरेडी है, ठीक है, डेटा लॉकिंग ओनरशिप सम रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। और यहाँ के सेटिंग में जाकर चेक करेंगे हम, ठीक है, डेटा एक्सेस एंड प्राइवेसी में एक्सेस एंड प्राइवेसी में था वो, सॉरी, एक्सेस एंड प्राइवेसी वाले में भी है। In the access and privacy, we do have a option called validation rule, right? But still it is not yet enabled, and I can see data locking owner is available over here, right? So why it is available? Reason, if you'll go into the dimension setting, and here you can see data locking ownership is already the right access is given. Because of that, these two columns are added. Okay. In our model, it was not checked, but still in that particular dimension, like we have opened the entity dimension, right? This entity dimension, in that we do have a data locking, right access is there, you can see responsible and data locking ownership, right? These two checkboxes are added. Because of that, you can see these two columns got added over here. Clear? So that's what it is talking about. Okay, so view the setting of the entity dimensions in the dimension table panel on the right. Notice that the while data locking ownership is activated, but the data locking owner column is in the table is empty. ठीक है, पूरा empty है. Okay,
Define the person responsible for all the entity dimension as follows. For enterprise till Southeast, we have to provide the same user. Which user will choose is A27. Okay. A27. We can copy it, Control C. We can do Control V. Like this way, you can copy Control C, Control V, Control V, and Control C and Control V. Okay. Data locking owner. Okay. So normally you would not have data locking owner column at this point. However, this model was previously tested for the data locking. Okay. So in the model preferences, enable data locking for your complete model. Default locking state of open and save model. ठीक है, मैं इसका solution में जाता हूँ. There we will find better answer. Okay. Yes. So we have to click and all. Okay. So now it is asking us to save it. You can go into the setting, access and privacy, and then enable no data validation, data locking. Click on OK. Okay. So select the data locking. Confirm that default lock state is set to open. We forgot to check that. Okay. Access and privacy. Default log state is set to open. This is the option it is talking about. Okay. So here we do have a log, then open. Okay, so right now it is open. Select OK, save. And now configure the data logs and add entity as a driving dimension. Configure data locking owners as follows. Okay. So data locking owners is like entity, enable ownership version, and copy responsible user. Okay. So select the lock, configure data logs icon at the top of the screen. So we'll go and click into the lock icon, and there we have a version. You can see driving dimension is there, version and date is there. Okay. Here version and entity it is asking us to use. Okay. So what I will do is I will add one more. Driving dimension is entity. You can see driving dimensions, enable ownership, and copy responsible user. These two check, this table is got added over here, data locking owners. Okay. Okay. So here we have to choose in the entity both copy Okay. responsible user. Okay. This done. In the data locking owner area, make selection as provided above. Select finish editing in the upper right of the dialog. Okay, so you can see finish editing is button is there. So once you will make it, that is going to be added as a driving dimension over here. Okay, so you can see continuing in the data locking dialog, configure the data locking filter as follows. Okay, version, date, entity, these are there, right? You can see driving dimensions. So we do have all version is there, right? So we have to select here forecast. Select forecast, and date should be
our Q1 2025. Okay. So I will expand 2025 and here I will select Q1 and it should be enterprise. So instead of all, choose enterprise. This is done. Okay. Select the version driving dimension filter, select forecast. Okay. This is done. So the driving dimension filter have been set to the data logging dialog. Next, you will set the log status for the data region that you just set up. Set the initial data log status follows. So here select grid button. So we have show grid button. In that way, what will happen is your data is going to be visible over here, whatever the driving column we have taken up over here. Yes. Okay. Next is select the drill down for the date dimension. Drill for that and select level 4. So for date dimension, I will right click on top of this. Right click on top of this, or we can say to select the expand icon. Okay, so here using the drop down menu in the Q1 2025 column, change the data log status for specific from open to restricted. Okay, so Q1, Yes. here you can see स्क्रीनशॉट में ऊपर दिख रहा है, ठीक है, restricted, ठीक है, restricted. So and for south it should be logged. नीचे होगा, ठीक है. Yes. So using the drop down menu for the column, change the status southeast should be logged. Okay. Should be logged. Okay. On the right lower, select close. Okay. This is done. So you have set the initial log status for the focus version for Q1 and enterprise members. Yes. Okay. Confirm the following assignments for entity dimension. We have already set up the locking owner. Okay. So now just close it. And you can see person responsible got copied into the data locking owner also. Okay. So you can see confirm the following assignment for the data dimension. So in the person responsible also have the same data locking owner. Okay. So share the model with full control access as follows with the following user. Okay. We'll save this. So we'll go and share the model with P user A with full control. Okay. Click on share.
So this has been shared to that user. Okay, so note, if you cannot select P user A, P user B, ask your interested to log into the user and available you can do yourself in another Chrome session. Okay. We have done with that exercise. Now what we'll do is we'll perform data logging. So till now we have configured it, what is the person responsible, what is the data logging owner, and we have configured the data logging also. Okay. Yes. And we have given the filters, and based on that we have shared the model. Okay. Okay, so now you have configured data logging and now you want to test it. Whatever we have configured is working fine or not. So you want to prevent changes the planning data in a story. So you will test the restricted data log status behavior with the user who is assigned as the data logging owner and one wizard. Okay. Okay. Yes. So task flow is, in this exercise you will be performing the use data logging as a data log owner, use data logging as a non-log owner, and change a value as a log owner, and set the log status to open as log owner. Okay, so we are going to perform this over there. So here we already logged into the system. Use data logging as a log owner. So go to the story application from the side navigation bar, and from the side navigation bar select stories, create a new story with canvas page and the table based on the following model. Okay, so we'll go directly from here and we'll create a story, we'll create a canvas story, edit the page title as process control. So page name we'll give it to process control. Okay, save the story with my files with this name. So this is done. We have saved it. Share the story with the user A with edit access. इसमें table add करने के लिए बोला गया, and table based on the following model. We forgot to add the table visit.
Okay, so this is done. Let me just save the story once again. Story is saved. Now we have to share the story with the user. So let's share the story. User A. And share this dialog, add user. In the access dropdown, select edit. So we'll have a edit access we'll give. Share, choose OK. And Okay. close it. Okay. In the builder panel, configure the table as follows. The adaptive column width should be this, arrange this, row should be entity, column should be date, row should be entity, and column should be date. So in the column we'll add date, and filter will have a date member should be 2025. So we'll add filter, date member should be 2025, and account should be net revenue. Account should be net revenue. And version should be forecast. And video image should be shine data. Measure is shine data. See the build table structure is there. So the start of approval. So we have already done this. Now display the leaf node of the enterprise node. So in the table, select node, expand next to that. You can now see 4 region of the table. So here when we expand it, so we can see Middle East, Northeast, Pacific, Southeast. Okay. So display knowledge. So set the drill label for the date most detailed label. So we can right click on top of this and drill label 4. We can do drill label the drill the data into this way. Clear? So as the owner, you see unlock data for the Middle East, Mid-East, Northeast, and Pacific region as it's set to the restricted, and owners can change the restricted data. So you can see Midwest, Northeast, and Pacific. For this, you can see data enable is there, so I can change the data. Okay. Pacific also I can change the data because I am the owner of this. Southeast, you can see it is logged, so I am not able to change the number. Getting the point? Yes. So the Southeast region is the gray for quarter 1 as it is logged status. Yes. So in the quarter 1 only you can see Jan, Feb and March. Quarter 2 में देखो it's still enable. हाँ ठीक है. So you can change the data. समझ में आ रहा है? जो हमने लॉकिंग कहानी उधर लगाई थी वही हम we are able to see it over here. ठीक है. Display the lock indicator. Okay, so with the table widget selected, navigate to more actions, show hide data logs. ठीक है. अगर आपको देखना है तो कैसे कर सकते हैं? You can go into this, go into the show hide and
there is an option called show logs. आपको ऐसे लॉग दिख जाएगा कि कहाँ कहाँ पे लॉग है, क्या Yes. देखो यहाँ पे ताला दिख रहा है, ठीक है। Mhm. In the each node, wherever in the each of the log cell has a lock indicator. Since the enterprise node has one log member and the rest are unlocked, so it has mixed state status. तो ये वाला देखो mixed state है, क्योंकि इसमें कुछ लॉग है कुछ अनलॉक्ड है, इसलिए हमको इसमें मिक्स्ड वाला दिख रहा है, ठीक है। Okay. And the following image is an example for the expected results, so your value may vary, ठीक है, Okay. वैसे दिख रहा है। Now save the story. So as an owner and data locking we did, so we are able to see as expect, ठीक है। Now what we'll do is use data locking as a non-lock user, ठीक है, owner। तो अब हम क्या करेंगे, p यूजर से लॉगिन करेंगे, ठीक है। p यूजर से लॉगिन करने के लिए हम क्या करते हैं, चलो एज में ओपन कर लेते हैं, सेम SAC, ठीक है। उसी सिस्टम के अंदर मैं एज में सेम सिस्टम p यूजर से लॉगिन करूंगा, ठीक है। Okay. p यूजर a, count 1, so you can see A27 user is now editing the story, ठीक है। Still I have logged in with that p user a, so I'm getting that message that this Yes. particular user is logging in, ठीक है। Yes. अब ये देखते हैं यहाँ पे, so what is there, so using keyword shortcut control plus C, copy the URL from your Chrome and go into the new Chrome, वो हमने कर लिया, ठीक है। कंट्रोल V and log in with your user A and B, ठीक है। So change the quarter one values as provided below, ठीक है, in the scenario, so you are not the logged owner, place the changes, ठीक है। Okay. Mid west and northeast में we can make the changes over there, Okay. ठीक है। So enter the data provided in the table above, right click into the cell table and just select the version, publish it, Okay. ठीक है। क्वार्टर वन में हम क्या करेंगे, इतना वैल्यू डाल देंगे 12,000 मिलियन, ठीक है। कहाँ पे बोल रहा है क्वार्टर वन, 2025. यहाँ पे बोल रहा है, राइट। Yes. तो व्हाट विल डू, 1 2 3 M, इतने ही ना, Yes, sir. एक और चार भी 4 जीरो थे यार, सॉरी। 1 2 1 2 3 4 M, ठीक है, अभी बराबर है, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट में 16 आई मीन 1,60,000, ठीक है। तो यहाँ पे 1,60,000 M, ठीक है। Okay. मैंने देखो इधर चेंज किया है, हाँ. वो जो ऊपर वाला नंबर है, ठीक है, उसमें क्या चेंजेस होते हैं देखते हैं हम, ठीक है। ऊपर वाला चेंज हो रहा है बट नीचे वाला जो है देयर आर किट इज नॉट गेटिंग चेंज एनीथिंग ओवर देयर, Yes. ठीक है। व्हाई, बिकॉज दिस इज, I mean, the Pacific we have made it to the restricted and Southeast we have made it to the logged, right? Yes. तो ये वाला जो ओनर था, ये वाला यूजर था हमारा, ये पी यूजर है, ये इसको हमने फुल एक्सेस तो दिया होता सिस्टम में, बट he will not be able to also change the data into the restricted area, okay? But wherever it is possible, it is there, right? So in the publish dialog, select the publish forecast version, ठीक है। यहाँ पे publish वाला ऑप्शन है, publish data, ठीक है, publish it।
So try to change the log status for the enterprise for Q1. ठीक है? Right click in the data cells of enterprise Q1 and select the manage data logs. Yeah, so in the drill data log dialog, select drill dimension for entity dimension and expand to level 2. ठीक है, तो ये हमारा पब्लिश हो गया है, ये हमारा ऑलरेडी दिख रहा है. ठीक है, सो ग्रिड शोज इज योर डेटा लॉग. ठीक है, and whatever it is not there, so now select close to return to the story. Turn on ignore data logs and try publishing a data change to the specific region for March 2025. कहाँ पे करनी है? एंटरप्राइज Q1 and select manage data logs. Manage data logs कहाँ पे देखना है? Manage data logs. ठीक है, and then in the data logging dialog, select drill to the entity. So then expand level 2. So the grid shows that the log status of the all children of the enterprise parent is displayed mode. You cannot change the log status because you are not the authorized. ठीक है, यहाँ पे देखो हमको ये चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है. ठीक है, बिकॉज वी आर नॉट द ओनर. सो ओनर कौन है? जो पिछला वाला यूजर से जो हम लॉग किया था, दैट इज द यूजर. ठीक है, सेलेक्ट क्लोज स्टोरी. ठीक है, ये हो गया क्लोज. Turn on ignore data logs and try to publish a data change for the specific region for March 2025. So select the edit to open the story in the edit mode. ठीक है, ये स्टोरी जो है ये वाला, ये जो हमने इसमें ओपन किया हुआ है एज में, हमारा इसका हो गया, ये हमारा एज का हो गया. इसको हम एडिट मोड में ओपन करेंगे. एडिट मोड में ओपन कर लिया. Select the table, go more action, select the table, go more action, and then ignore data logs. Okay, ignore data logs. ठीक है, अभी मैंने ignore data logs कर दिया, तो what will happen is you can now edit the sales previously restricted by data. So logging, but you might not be able to publish your work if data log violation are detected. ठीक है, अभी हमने चेंज तो कर दिया है, I mean ignore data logs, but हम still you can change it, but publishing will not allow you. ठीक है, that's what it means to say. समझ आ रहा है? Now in the Pacific region of March 2025, enter just 10%. So in the Pacific in March 2025, I will add plus 10%. ठीक है, देखते हैं क्या बोलता है वो. ठीक है, violation will come. ठीक है, data is getting changed. Okay, so the total is recalculated. So from the total options in the and try data advance and publish all. ठीक है, यहाँ से
पब्लिश डेटा, नहीं कैंसिल, यहाँ पे एडवांस में जाना है, यहीं से बोलो ना, डेटा एडवांस पब्लिश ऑल, ठीक है, पब्लिश ऑल, ठीक है। तो अभी हमको you will get the warning, some of your data changes can't be published because of one or more reason, such as existing data logs. If this version is published, those changes will be lost. Okay. So still it is allowing us to change. Okay, so you will receive message that some of your changes is this and will be lost it. So select publish. So the changes of the specific region was not published. ठीक है, ये publish करेंगे वो changes of the data changes is not published, ये back to previous form आ गया, ठीक है। So enforce data logs, so go to the more action, enforce data logs, ठीक है। So now enforce data log, ठीक है। Close the Google Chrome Igniter tab, change the value as log owner, ठीक है। Return to your Chrome session, ठीक है। अभी हम इसको बंद कर देते हैं, इसका काम खत्म हो गया। Now we'll come back to our original story जहाँ पे हम काम कर रहे थे, okay? So here if you accidentally close the story, you can open it from your homepage recent story. If you have received a system message saying that the story has been updated by the planning reporter, ये देखो यहाँ पे मिल रहा था, हमको एक मैसेज आ रहा था अभी, ठीक है। I mean that has been gone because मैंने वो Chrome वो वाला टैब बंद कर दिया, ठीक है। We are getting that particular message over there, ठीक है। That's what it is talking about, ठीक है। The story will display the changes that you made in the Midwest and Northeast region. तो यहाँ पे हमने जो चेंजेस करे थे, I mean let me refresh it, वो हमको दिखेगा 16 वाला, और जो नंबर हमने डाले थे ना 12 1,20,000, ये वाला देखो, a planner reporter is now editing the story, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने 1,20,000 मिलियन डाला था, यहाँ पे 1,60,000 मिलियन डाला था, तो वो नंबर अभी अपडेटेड हो गया है, ठीक है। तो change the Q1 value for the specific region as provided below, ठीक है। Q1 में 1,70,000 मिलियन डालना, ठीक है। यहाँ पे देखो हमको अलाउ कर रहा है, ठीक है। इसको मैं चेंज कर दूंगा 1,70,123 M, ठीक है। So open the story in that it mode and then do this and please enter the confirm the value, publish the changes, ठीक है। अभी हम इसको जैसे वो डेटा एंट्री एंटर हो जाएगी, it will allow us to कैसे पब्लिश करना है, पब्लिश डेटा एंड पब्लिश, ये पब्लिश हो जाएगा। ये पब्लिश क्यों हो जाएगा, रीजन की we are the owner, I mean I am the owner of this particular story, ठीक है, ठीक है। So although the specific region is rejected, you can publish the changes because you are the lock owner, ठीक है। Set the lock status to open as the lock owner, ठीक है। So as the planning administrator, you need to unlock the data region in the preparation for the upcoming planning cycle, ठीक है। So set the data lock status for the forecast version to open for 2025 for enterprise entity. So right click onto the data cell of enterprise and 2025 and select manage data logs and select open for the combination of enterprise and 2025, ठीक है, and select the close dialog, okay. Just talking about here, right click on top of this and here go to the manage log and here what it is meaning is
you have to make it to open. ठीक है, सब कुछ Yes. ओपन हो जाएगा. ठीक है, ओपन करके सेव कर देने का. तो जैसे आप ओपन करोगे सब Okay. कुछ आपका ओपन हो जाएगा. ठीक है, आगे समझ में, I mean Yes, sir. how you can make the locking status, how you can share the story with the log status, and you can check the things that log owner is able to do it, but the person with full control you have shared is not able to change the data into the story. Still he is the full control owner. ठीक है, मैं एक्सेस उसको एडिट का भी दिया था एंड फुल कंट्रोल दिया था, स्टिल ही Yes, इज sir. नॉट एबल टू. Is not able to edit it. Yes. ठीक है, सिक्योरिटी वाला पार्ट था बेसिकली, मोर Yes. और लेस. ठीक है, Yes. ये हमारा CP23 कंप्लीट हो गया इसमें. ठीक है, अब हम एक और एक्सरसाइज उठाते हैं. हम ये अब 24 वाला उठा लेते हैं. ठीक है, Yes. इस वर्जन. ठीक है, ये अभी हम कल से कंटिन्यू करेंगे वैसे तो, बट आई एम ट्राइंग टू शो यू कंटेंट की क्या क्या है उसमें. ठीक है, Okay. तो अभी तक हमने जो किए हैं ना उसमें बहुत सारे रिपीटेटिव आएंगे. ठीक है, वो मैं आई विल ट्राई टू इग्नोर दोस. ठीक है, create the planning story you will use in this course. ठीक है, Okay. प्लानिंग स्टोरी यू कैन क्रिएट इट. तो हम ये नहीं भी करेंगे तो चलेगा, हमने ऑलरेडी ये किया हुआ है. ठीक है, सो हाउ कैन क्रिएट अ प्लानिंग स्टोरी. ठीक है, इसमें मेन हमारा डेटा एक्शन कॉपी डेटा विद इन अ मॉडल. तो हमको एक डेटा एक्शन पढ़ना है, राइट. एड एंड रन द कॉपी डेटा, तो ये वाला पूरा करना है. ठीक है, एड एंड रन द डेटा एक्शन. तो अब इसमें हमारा पूरा डेटा एक्शन कवर हो जाएगा. ठीक है, Okay. ये वाले में हमारा रन एंड एडवांस फॉर्मूला डेटा एक्शन टू द कैलकुलेट लेवल. ठीक है, तो इसमें हमारा और एडवांस लेवल पे जो हम डेटा एक्शन मल्टी एक्शन यूज करने वाले हैं, ये 2 यूनिट में हमारा मल्टी एक्शन एंड डेटा एक्शन कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, Okay. इसमें हमारा एलोकेशन कवर हो जाएगा. ठीक है, फैंसी ट्रांसलेशन हमने किया ऑलरेडी, फिर से ये आएगा दोबारा. ठीक है, एंड के बाद में उसके बाद में हमारा फोरकास्टिंग एंड सिमुलेटिंग प्लानिंग डेटा. ठीक है, रोलिंग फोरकास्ट हमने किया था कि अभी नहीं किया ना, राइट. ठीक है, यहाँ पे हमारा रोलिंग फोरकास्ट आ जाएगा एंड स्मार्ट प्रेडिक्ट हो जाएगा एंड वैल्यू ड्राइवर ट्री हो जाएगा, BDT. ठीक है, वैल्यू ड्राइवर ट्री कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, और ये कैलेंडर वाला हमने ऑलरेडी किया हुआ है. ठीक है, एंड रन अ प्लानिंग प्रोसेस. ठीक है, तो ये वाला हमने किया है ऑलरेडी, एक बार और हो जाएगा ये कंप्लीट. ठीक है, इसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा पूरा कोर्स. ठीक है, हमको ये 15-16 एक्सरसाइज और करनी है. ठीक है, शुरू की है हमारे 3-4 तो फटाफट हो जाएंगी. ठीक है, मतलब एक सेशन में कंप्लीट हो जाएंगे, फिर इसके बाद हमको एक सेशन लगेंगे इधर. ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली अगले एक वीक में विल कंप्लीट दिस. ठीक है, इसके बाद में और कोई टॉपिक ऐसे छूटा रहेगा so personally I mean I will try to pick it up and I will try to